Hello everyone. I welcome you all to our United classes. So basically this is our second video and this video is part 2 of our first video which was on nature of management, and the topic which is to be discussed in this video are nature of management as science, profession and art. Then levels of management के क्या levels है, क्या levels है, top, middle, lower. Then functions of management के क्या functions है, and what is coordination. What is coordination? I added this topic because it's also one of the important topic of this chapter. So if you like our video, please like, share and subscribe our channel. So without wasting much time, let's start our lesson. So our first topic is nature of management. So first is management as art. So art is the skillful, personal application of existing knowledge to achieve desired results. It can be acquired through study, observation and experience. So basically art क्या है? बेसिकली जो हम सीखते हैं, पढ़ते हैं, उन चीज़ों का प्रैक्टिकली आप वर्क में लाना, that is art. Like if a manager studies, like he studies management in some institution, and after studying management principles, he join an organization and start working for it. He bring those study of his in work. उस तरीके से मैनेजर एक ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है उसकी पर्टिकुलर गोल्स और एम्स को अचीव करने में. सो मैनेजमेंट में आर्ट के कुछ फीचर्स है. लाइक फर्स्ट इज एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज. लाइक एक्सपर्ट्स इन देयर रेस्पेक्टिव एरियाज हैव derived certain basic principles which are applicable in a particular form of art. तो हर फॉर्म ऑफ आर्ट में कुछ ना कुछ थियोरेटिकल नॉलेज है. लाइक लिटरेचर ऑफ डांसिंग के भी बहुत सारे फॉर्म्स हैं, उन पर भी बहुत सारे लिटरेचर्स हैं. देन पब्लिक स्पीकिंग, देन एक्टिंग और म्यूजिक, इन सब चीज़ों के करने से पहले इनके लिए भी बहुत सारे स्कूल्स हैं, बहुत सारे कोर्सेज है. दे ऑल्सो हैव एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज विच आर वाइडली रिकॉग्नाइज्ड. अगर एक एक्टर बनना है तो उससे पहले भी एक्टिंग स्कूल्स होते हैं, वहाँ भी एक्टर बनने से पहले भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो पढ़नी पड़ती हैं, द मेथड्स. सो देयर इज इन आर्ट देयर इज एक्सिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज. सेकेंड इज पर्सनलाइज एप्लीकेशन. पर्सनलाइज एप्लीकेशन इज अबाउट कि आपने आर्ट पढ़ लिया, सीख लिया, थियोरेटिकली आपने सब चीज़ पढ़ लिया, देन उस चीज़ को रियल लाइफ में अप्लाई करना, that is personalized application. Art therefore is very personalized concept for two dancers. आपने acting सीखा, music सीखा, and after that you applied it in real life. But because we are dealing with humans, one human will be different from other. Like if two dancers, they are two dancers, they both are dancers, but their genres are alag. Like one is contemporary and one is hip hop. So there can be difference in their dance forms, but they both are dancers. So the application of the theoretical knowledge depends upon the person. Person पे depend करता है कि वो उस चीज को किस तरीके से अप्लाई करेगा. तो जस्ट लाइक कि अगर मैनेजर है तो उसने भी, दो मैनेजर्स है, दोनों ने प्रिंसिपल्स सीखे हैं, मैनेजमेंट सीखा है, पढ़ा, बट वो उन चीजों को किस तरीके से अप्लाई करते हैं, that depends on that particular person. So that is personalized application. Third is based on practice and creativity. Based on practice and creativity is about कि सीख लेने के बाद हर चीज प्रैक्टिस के साथ क्रिएटिविटी भी इंक्रीज करती है. You have to practice it from time to time. Like art involves the creative practice of existing theoretical knowledge. तो जो existing knowledge है, जो हमने सीखा, उस चीज को practically apply करना, उस चीज को practically करना. We all know that music is based on 7 notes. However, what makes the composition of a musician unique is the different in his use of these notes. तो ये सबको पता है कि 7 नोट्स है म्यूजिक के, बट एक म्यूजिशियन उसको किस तरीके से यूज करता है, इट डिपेंड्स ऑन
दैट म्यूजिशियन, जस्ट लाइक आई सेड कि अगर एक मैनेजर सारे प्रिंसिपल्स एंड मैनेजमेंट वो सीख लेता है, उसके बाद भी वो उस चीज़ों को किस तरीके से अप्लाई करता है वो पूरा बेस्ड है उस पर्टिकुलर पर्सन पे. सो दैट इज रिलेटेड टू बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड creativity, his own practice and his own creativity. Now, अब आर्ट के फीचर्स पढ़ने के बाद we will compare कि किस तरीके से management is similar to art. Here is management can be said to be an art since it satisfies the following criteria. So it satisfies these criteria. First is a successful manager practices the art of management in day-to-day job, managing an enterprise based on study, observation, experience. There is existence of theoretical knowledge. So basically, एक मैनेजर एक इंस्टीट्यूशन में जितने भी वो चीज़ें पढ़ता है, सारे मैनेजमेंट रूल्स प्रिंसिपल्स, वो उन थियोरेटिकल नॉलेज का अप्लाई करता है ऑर्गेनाइजेशन में. सो देर इज एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज विच सेटिस्फाई द आर फर्स्ट feature of art. Then second is there are various theories of management as propounded by many management thinkers which describe certain universal principles. So we have various principles of management, and a good manager works through a combination of practice, creativity, imagination, initiative, innovation. A manager receives perfection after practice. So एक मैनेजर भी जैसे एक आर्टिस्ट लॉन्ग प्रैक्टिस के बाद परफेक्शन अचीव करता है, लाइक वेदर इट्स अ सिंगर, एक्टर, just like them, a manager also achieves his perfection after practicing the management for a long time. So अगर हम एग्जांपल लेते हैं, एक न्यू मैनेजर है, एक सीनियर मैनेजर है, तो सीनियर मैनेजर इज मोर एक्सपीरियंस्ड, ही हैव डन मोर वर्क, so he is more experienced, that's why he is on a upper position. So to become the best, it involves long practice. So there are second criteria also fulfills, that is practice and creativity. Then third is a manager applies his acquired knowledge in a personalized, like जिस तरीके से एक आर्ट में एक आर्टिस्ट दूसरे आर्टिस्ट से अलग होता है बिकॉज उसके पर्सनल स्किल्स के वजह से, उसके पर्सनल एप्लीकेशन के वजह से, जस्ट लाइक दैट अ मैनेजर इज डिफरेंट फ्रॉम अनदर मैनेजर. लाइक अगर एक मैनेजर है वो किस तरीके से प्रिंसिपल्स का अप्लाई कर रहा है अपने ऑर्गेनाइजेशन में, इट टोटली डिफरेंट फ्रॉम अ मैनेजर हु इज इन अनदर ऑर्गेनाइजेशन एंड द वे ऑफ हिज वर्किंग. सो देयर इज application of personalized skills. So our third criteria also get fulfilled. So we can say that management is related to art. They have similar features. So next is management as science. Science is a systematized body of knowledge that explains certain general truths and or the operations of general laws. तो फर्स्ट ऑफ ऑल साइंस क्या है? साइंस इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज जो कि कुछ ट्रुथ्स को जस्टिफाई करते हैं और द ऑपरेशंस ऑफ जनरल लॉज, लाइक जो लॉज बने, लाइक लॉ ऑफ ग्रेविटी, न्यूटन्स लॉ, ये सारे कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड हैं. कुछ सारे वो ऐसे लॉज है जो कि दे कांट बी चेंज्ड, दे आर यूनिवर्सल, दे हैव यूनिवर्सल adaptability. They have universal application. So science is a systematized body of knowledge. Some features of science are systematized body of knowledge, which is science is systematized body of knowledge. Its principles are based on cause and effect relationship. For example, phenomena of apple falling from a tree towards the ground. It's explained by law of gravity. So जो ऑब्जर्वेशन होते हैं, जो लॉज होते हैं साइंस में, वो किसी न किसी कॉज और इफेक्ट पे बेस्ड रहते हैं. लाइक ये कॉज हुआ, देन उसका क्या इफेक्ट्स हुआ, उस चीज पे बेस्ड होते हैं. सो एंड उनका एक पर्टिकुलर डेफिनेशन एंड दे आर टर्म्ड एज लॉ, लाइक लॉ ऑफ ग्रेविटी एंड न्यूटन्स लॉ, मोशंस लॉ. सो दे आर बेस्ड ऑन सम एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन. Second is principle based on experimentation. Like scientific principles are first developed through observation and then tested through the repeated experimentation under controlled condition. So जो साइंस में जो भी प्रिंसिपल्स बने हैं वो ऑब्जर्वेशन एंड
tests के through various. So every principle in science is framed on the basis of experimentations. So various experimentations are done, they are tested, and after that a principle is framed. Just like Newton's third law, every action has equal or opposite reaction. So these types of laws are based on various experimentations and observation. Third is universal validity. Like unlike other principles, the principle of science have universal validity. Like अगर एक एप्पल अगर यहाँ गिर रहा है इंडिया में, so just in the same way, every apple falls from the tree in the same way. So they have universal validity of the principles. So according to the features of science, if management is similar to science or not. So based on the above feature, we can say that the management has some features. So first is management as systematized body of knowledge. So just like science, management also have systematized body of knowledge in case of communication, like in case of communication with one another with the help of common vocabulary or a better understanding. Like in an organization, the communication between the employees are done with a systematized body, like from superior to subordinate, then subordinate to his immediate subordinate. There is a line of communication, and the vocabulary is also formal. In organization, in जहाँ हम काम करते हैं वहाँ हम कभी भी informal speech में बात नहीं करते. We always use formal way of communication. So it also have some systematized body of knowledge, but it's not exactly like science. Then second is the principle of management have evolved over a period of time on the repeated experimentation. However, since management deals with human beings and human behavior, the outcomes of the experiments not capable of being accurately predicted. जैसे कि साइंस में एक्सपेरिमेंटेशन से हम प्रिंसिपल्स बनाते हैं, we also try to make principle on the basis of experimentation and observation. But क्योंकि in management we are dealing with people, human beings, और उनका बिहेवियर टाइम टू टाइम चेंज होते रहता है, तो एग्जैक्टली हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कब किसका बिहेवियर कैसा होगा. तो उस बेसिस पे खास करके ह्यूमंस के बिहेवियर पे हम कभी भी कोई एग्जैक्ट लॉ नहीं बना सकते. तो विथ टाइम these laws get changed. Third is such principles of management are not exact as the principle of science. Their application and use is not universal. So जिस तरीके से साइंस का प्रिंसिपल यूनिवर्सली वैलिड है, बट मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स उतने एग्जैक्टली एंड यूनिवर्सली वैलिड नहीं है, बिकॉज वी आर डीलिंग विथ ह्यूमन सिचुएशंस एंड द लॉज एंड प्रिंसिपल गेट चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम. They have to be modified according to the given situation, right? So जैसे सिचुएशंस अराइव करते हैं उस बेसिस पे उन प्रिंसिपल्स को हमेशा बदलना, उन्हें मॉडिफाई करते रहना पड़ता है. So third is management as profession. So you would also have observed that organization look for individuals with specific qualification experience to manage them. तो ये देखा होगा आपने कि हर ऑर्गेनाइजेशन में they require some professionals to run their organization. Like they अगर एक सॉफ्टवेयर कंपनी है तो वो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स या सॉफ्टवेयर रिलेटेड में स्किल्ड पर्सन ही खोजेंगे. तो organization look for professionals to run their company, to manage their operations. So profession is related to a person who is professional in his particular field. So professions के कुछ फीचर है, जैसे first is well defined body of knowledge. तो profession का जो knowledge, जो theoretical knowledge होता है, that is well defined. You have to study those theoretical materials. You have to gain knowledge in that particular field from any institution. Then you will be qualified for a professional. So all professions are based on
well-defined body of knowledge that can be acquired through instructions. Second is restricted entry. Restricted entry is the entry of a profession is restricted through an examination. So, a person cannot be a profession just if he wants to. Because अगर एक डॉक्टर है तो he will treat patients, right? He can't go and like start singing, or he can't just start going and start repairing things, doing a work of engineer. So he's professional in his field, and he have to clear an examination to become professional in that field through acquiring educational degree. For example, to become a chartered accountant in India, the candidate has to clear a specified examination conducted by Institute of Chartered Accountant in India. So, अगर आपको chartered accountant बनना है, तो you have to clear this exam, which is conducted by Institute of Chartered Accountant India. So, अगर इसी तरीके से हर profession is restricted by a particular examination. Like अगर doctor बनना है, तो first you have to clear NEET, and then you will get admission in a medical college. So, professional degrees are restricted through this examination. So, there is restricted entry. Third is professional association. So, all professionals are affiliated to a professional association. So, professional association which regulates entry, grant certificates of practice, formulates and enforces a code of conduct. For example, to be able to a lawyer in India, you have to become a member of Bar Council. So, for entering a particular profession, there are professional association who grants you entry and grants you certificate to practice those profession. Like medical colleges give you degree of that you are a doctor, and a chartered for CA, Indian Institute of Chartered Accountant give you certificate that you are CA. So in this way, these associations grant you permission that now you can practice this profession. So that is professional associations. Fourth is ethical code of conduct. All professions are bound by a code of conduct which guides the behavior of its members. All the doctors, for example, take the oath of ethical practice at the time of every when they enter that profession. So, ethical code of conduct is about you are taking oath that you will practice your profession with full faith, and you will be stay true to your profession. Like अगर एक डॉक्टर बन रहा है, तो ये वो ओथ लेता है उस प्रोफेशन में एंटर होने से पहले कि he will treat his patients. So to treat his patients first, to save their life. So before entering a profession, one have to take these oaths to stay true to his profession. That is the ethical code of conduct. Second, fifth is service motive. Like if you are entering a profession, अगर आप किसी profession में हो, then you are there to provide your services to your client. Like if you are a chartered accountant, so आप अपना सर्विस अकाउंटेंट का दोगे, जो आपके पास जो क्लाइंट्स आएगा वो क्या है होंगे, वो आपके क्लाइंट, आपके कस्टमर जो आपकी सर्विस लेंगे, एंड ही विल पे यू फॉर दैट. Like the basic motive of a profession is to serve their clients' interest by rendering dedicated and committed services. The task of a lawyer is to ensure that his client gets justice. So, अगर आप एक lawyer हो, you are skilled and professional in that field, then your services that कि आपका जो client है उसको justice मिले. So that is service motive. That is you are providing your service to the organization, just like a manager, he is giving his service to the organization. So management does not
meet the exact criteria of a profession. However, it does have some features. So मैनेजमेंट के कुछ फीचर्स मिलते हैं प्रोफेशन से. दैट इज इट इज बेस्ड ऑन सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज कंप्राइजिंग वेल डिफाइंड प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन वैरायटी ऑफ बिजनेस सिचुएशन. सो जिस तरीके से प्रोफेशन के भी वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होते हैं, जस्ट लाइक दैट मैनेजमेंट के भी सिस्टमैटिक एंड वेल डिफाइंड knowledge and principles होते हैं, like principles of management, like principles given by Fayol, which we study in the next chapter. There are principles and techniques which are given by some management thinkers. Then with the specific purpose of providing management education, such as Indian Institutes of Management. So there are institutes also which provide these well-defined knowledge about these about the management. There are institute in IIMs. And second is there is no restriction on anyone being designated or appointed as a manager in any business enterprise. So business में मैनेजमेंट में कोई restricted entry नहीं होती है. कोई भी मैनेजर बन सकता है. लाइक एनीवन कैन बी कॉल्ड अ मैनेजर इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन. सो कोई भी पर्सन मैनेजर बन सकता है, एम्प्लॉय बन सकता है, अगर उसमें स्किल है, नॉलेज है. इफ ही इज स्किल्ड इन मार्केटिंग और प्रोडक्शन, so it's educational degree don't matter that much in management. Anyone can call a manager irrespective of this educational qualification. So just like the professional association, there are also various associations for managing practicing management, just like IAMA, All India Management Association. These association provides they lay down code of conduct to regulate activities of their members. So just like the professional association, we also have several associations to practice management, practicing managers like India. Then fifth is the basic purpose of management is to help the organization achieve its goal. तो management का basic feature ये है कि organization को उसके goal को achieve करने में help करें. They help the organization to achieve its goal. This may be profit maximization of the business, service for a hospital. So, however, the profit maximization as the objective of management does not hold true and it's fast changing. So, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो जाना चाहिए. हो सकता है कि ज्यादा प्रॉफिट कमाना है, और एंड सर्विस फॉर हॉस्पिटल, लाइक फॉर हॉस्पिटल टू प्रोवाइड सर्विस. बट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आजकल बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में जरूरी नहीं है कि उसका गोल प्रॉफिट ही हो. देयर आर ऑल्सो गोल फॉर ग्रोथ टू इंक्रीज देयर सेल्स. इफ दे इंक्रीज देयर सेल एंड प्रोडक्शन, ऑटोमेटिकली देयर प्रॉफिट विल इंक्रीज. सो the basic purpose of management is to achieve its goal. Now we are at the most important topic, which is levels of management. Management के क्या levels हैं? एक organization में क्या levels होते हैं? That is levels of management, which also shows that authority and responsibility relationship. So एक organization में we have seniors, then we have subordinates, and उन subordinates के नीचे भी कुछ workers होते हैं, that is foreman, workers और supervisors. तो first जो हमारा level है वो है top management. Top management में सारे वैसे लोग आते हैं जो है CEO, chairman, president, जो उस organization के founders है, जो उस organization के main people है. The level of management related to the senior most executives. So टॉप लेवल मैनेजमेंट में सारे सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव्स आते हैं, और ये इनका बेसिक वर्क होता है टू फॉर्म प्रिंसिपल्स जो ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करने हैं. वो प्रिंसिपल्स को बनाते हैं. दे फॉर्म दैट प्रिंसिपल एंड कन्वे दोज प्रिंसिपल टू द मिडिल लेवल मैनेजर्स. देन दे सी ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. सो बेसिक काम जो इनका क्या है टॉप लेवल मैनेजर्स का,
to make these principles and plans, and after making those plans they convey those plans and principle to the middle level, which is the middle level managers. Middle level is the link between the top and lower level. So top और lower level के बीच का पार्ट है middle level. जो managers आते हैं वो सारे middle level में. They are subordinate of the top management and superior of the first line manager. तो top level management के वो लोग सबॉर्डिनेट होते हैं, एंड जो उनके नीचे है उन नीचे वाले लाइन मैनेजर्स के लिए वो लोग सुपीरियर होते हैं. दे ऑल्सो नोन एज डिवीजन हेड्स. डिवीजन हेड्स लाइक वी नो कि ऑर्गेनाइजेशन में 4 डिविजन्स होते हैं: प्रोडक्शन, मार्केटिंग, सेल्स, HR. तो इनके जो हेड्स होते हैं दे आर मिडिल लेवल मैनेजर्स. दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग एंड कंट्रोलिंग द प्लान. सो ये क्या करते हैं, जब इन्हें ऊपर से टॉप लेवल से इन्हें जो प्लान्स और प्रिंसिपल्स और स्ट्रैटेजीज मिलते हैं वो उसे कन्वे करते हैं लोअर लेवल को. Interpret the policies framed by the top management, ensure that their department has necessary personnel, assign necessary duties and responsibilities to them, motivate them to achieve desired objectives, and cooperate with their departments for smooth functioning of organization. So ये सारे चीज वो परफॉर्म करते हैं. तो हमारा लास्ट हो गया सुपरवाइजरी और ऑपरेशनल मैनेजमेंट, विच इज लोअर लेवल मैनेजमेंट. तो इनका बेसिक वर्क क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल टॉप मैनेजमेंट से मिडिल लेवल को मिल गया सारा प्रिंसिपल्स और प्लान्स, एंड आफ्टर मिडिल लेवल उसने इम्प्लीमेंट कर दिया लोअर लेवल पे. देन लोअर लेवल बेसिकली वो फोरमैन वर्कर्स होते हैं, सुपरवाइजर्स, जो बेसिकली जो ऑर्गेनाइजेशन का काम है उसे परफॉर्म करते हैं, उसे करते हैं. कंप्राइज ऑफ लोअर लेवल हियरार्की ऑफ द सुपरवाइजर डायरेक्टली ओवरसी द एफर्ट्स ऑफ द वर्कफोर्स and their authority and responsibility is limited according to the plans drawn by the top. तो इनके बहुत लिमिटेड वर्क है, इनको बस जो ऊपर से इन्हें ऑर्डर्स मिले हैं उन्हें वो करना है, काम करना है. द क्वालिटी ऑफ वर्कमैनशिप एंड क्वांटिटी ऑफ द आउटपुट डिपेंड्स अपॉन द हार्ड वर्क, डिसिप्लिन एंड लॉयल्टी ऑफ द वर्कर्स. सो ये होते हैं सुपरवाइजर्स. जो हमारा वर्कर्स जो काम कर रहे हैं उनका क्वालिटी ऑफ वर्क सही होना चाहिए, डिसिप्लिन मेंटेन होना चाहिए, ना वो लोग को हार्ड वर्क करते रहना चाहिए. सो दिस इज अ डायग्राम टू सिंप्लीफाई दिस टॉपिक. टॉप लेवल which is consists of CEO, chairman, president. Middle level management, that is division heads, operation managers. Then supervisory level, that is supervisors and foreman workers. This is also a very important topic of this chapter, functions of management. And after studying these topics, we have separate chapters for these topic also. After this chapter, we have separate chapters for every function, planning, organizing, etc. So the functions of management is, first is planning. Planning is all about कि organization में क्या goal है, उस goal को कैसे achieve करना है. That is planning. Like implies setting of goals in advance and developing ways to achieve those goals. Effectively and efficiently. Effective and efficiently का मैंने आप लोग को मतलब बताया था फर्स्ट वीडियो में. Efficiently is producing quality products and service, and effectively is completing a work on time. So planning is all about setting goals in advance and developing a way to achieve them efficiently and effectively. गोल बना लिया ऑर्गेनाइजेशन का कि क्या करना है फ्यूचर में. अभी अगर हम यहाँ है लाइक इस लेवल पे है तो किस लेवल पे हमें पहुंचना है और उस लेवल पे कैसे पहुंचना है. ए टू जेड जो प्लानिंग चीज होगी दैट इन्वॉल्व्स द प्लानिंग फंक्शन. सो नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजिंग. तो एक बार ऑर्गेनाइजेशन ने गोल सेट कर लिया कि ये मेरा गोल है, एंड आफ्टर दैट उस गोल को अचीव करने के लिए सारे प्लानिंग हो गए. Then after that planning से पता लगा कि उस चीज में क्या चीजों की जरूरत है, like allocating the resources, किन resources का जरूरत है, assigning duties, क्या duties है उसमें कौन कौन, then क्या task perform करना है, then क्या authorities होंगी. ये सारी चीज का एग्जामिनिंग हो गया जब हमने प्लानिंग कर ली. आफ्टर दैट इन सब चीजों
को लाना, रिसोर्सेज एलोकेट करना, पर्सन्स हायर करना, ड्यूटीज। सो एग्जामाइन द एक्टिविटीज एंड रिसोर्सेज रिक्वायर्ड। सो जितने भी एक्टिविटीज एंड रिसोर्सेज कर लाने हैं, जितने भी एक्टिविटीज करने हैं उस पर्टिकुलर प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए, ये सारे काम होते हैं ऑर्गेनाइजिंग में। थर्ड इज स्टाफिंग। स्टाफिंग इज सिंपली hiring people. Staffing, simply stated, is finding the right people for the right job. The basic meaning, we can say, to find right people for the right job. A very important aspect of management is to make sure that the right people is at the right with the right qualification available at the right place and right time. So staffing is कि जो job organizing से हमने पता किया कि कौन कौन सा ड्यूटीज है, उनके लिए किन लोगों की जरूरत पड़ेगी, दैट स्टेप इज फुलफिल्ड बाय स्टाफिंग. We find right people with right qualification for that right job at the right time. This is also known as human resource function. So, सुना होगा आपने कि एक ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से पीपल हायर किए जाते हैं, through human resource function. It involves activities such as, इसमें activities होती हैं जैसे recruitment, selection, placement, training of personnel. So ये सारे फीचर्स हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स में, जो कि फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट एक सेपरेट चैप्टर्स आएंगे हर एक फंक्शन का. So staffing is just hiring people, right people for the right job. Fourth function is directing. So directing is related to कि जो भी वर्क असाइंड हो गया लोगों को, डायरेक्टिंग इज अ प्रोसेस इन विच द मैनेजर हैव टू सी दैट द पर्टिकुलर फंक्शन, द पर्टिकुलर ड्यूटी इज परफॉर्म बाय पर्टिकुलर पर्सन. लाइक जो काम असाइन किए गए हैं लोगों को, वो सारे काम सही से हो रहे हैं, जो टारगेट है वो अचीव हो रहा है. बेसिकली इन दिस द मैनेजर हैव टू मोटिवेट their employees by motivation and leadership. These are the two key component of direction. So motivating workers means simply creating an environment that makes them to work. So the manager have to direct and motivate the employees so that they want to work. Leadership is influencing others to do what the leader wants them to do. So motivation is motivating them to do the work, and leadership is that lead the team in such a way that what the organization wants to do them, they do that thing. Now controlling. Last is controlling. Controlling is the management function of monitoring organizational performance towards the attainment of organizational goals. So basically सारी चीजें हो गए, प्लान हो गया, प्लान इम्प्लीमेंट हो गया, स्टाफिंग लोग आ गए, डायरेक्ट हो रहा है, काम भी हो रहा है, सारा चीज देखा भी जा रहा है, मॉनिटर हो रहा है, एंड आफ्टर दैट लास्ट फंक्शन इज कंट्रोलिंग. तो जो सारे चीज हो रहे हैं, जो प्लान इम्प्लीमेंट हो गया, वो सही से वर्क हो रहा है यानी उस चीज को मॉनिटर करना. मॉनिटर ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस. तो जो परफॉर्मेंस है ऑर्गेनाइजेशन का, उसको मॉनिटर करना, उसे कंपेयर करना. टास्क ऑफ कंट्रोलिंग इन्वॉल्व्स एस्टैब्लिशिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस. तो बेसिकली कंट्रोलिंग इज कि जो टास्क हो रहा है उसका स्टैंडर्ड मेजर करना, और किस तरीके का वर्क अभी हो रहा है, किस तरीके का वर्क हमें चाहिए, कंपेयरिंग द स्टैंडर्ड्स विद द प्रीवियस स्टैंडर्ड्स, किस तरीके का वर्क हो रहा था, अभी कैसा हो रहा है. तो बेसिकली कंट्रोलिंग इज ऑल अबाउट कंट्रोलिंग द plan, controlling and monitoring the plans, the work which is happening in the organization. And if by controlling, by monitoring, अगर हम मॉनिटर किए सारा वर्क को ऑर्गेनाइजेशन का, उस बीच हमें कुछ चीजें पता लगी कि यहाँ डिफेक्ट है या दिस इज रॉन्ग, तो वी कैन टेक करेक्टिव एक्शंस टू करेक्ट दोज फॉल्स और डेविएशंस. सो बेसिकली हर एक फंक्शन इंटरलिंक्ड है दूसरे फंक्शन से. लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल प्लानिंग हो गया कि क्या करना है, गोल सेटअप हो गया, सारी चीज प्लान हो गए. देन ऑर्गेनाइजिंग सारा चीज कहाँ से आएगा, क्या क्या चीज उसमें लगेंगी, वो सारी चीज ऑर्गेनाइज हो गए. देन स्टाफिंग, जिन लोगों की जरूरत है उस काम को परफॉर्म करने में, सारे पीपल्स हायर हो गए. डायरेक्टिंग, काम
सारा डायरेक्ट हो गया, कैसे करना है, किस तरीके से करना है, पीपल मोटिवेटेड हो गए कि अच्छा परफॉर्म करे। लास्ट कंट्रोलिंग, काम सही से चल रहा है या नहीं, ये चीज मॉनिटर करते रहना। सो आवर लास्ट टॉपिक इज कोऑर्डिनेशन. So, here is a definition given by Theo Heyman. Coordination is orderly synchronizing of effort of subordinates to provide proper amount, timing, and quality of execution so that united effort lead to stated objectives, namely the common purpose of the enterprise. So, basically, coordination is कि सारे सबॉर्डिनेट्स का, एम्प्लॉयज का जो भी एफर्ट से सिंक्रोनाइज करके उसे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए लगा देना. So coordination is the force that binds all the function in the functions of the management. It is common thread that runs through all the activities, so, such as purchase, production, sales, finance. It ensures the continuity of the working of the organization. Coordination is sometimes considered to be a separate function. So coordination is all about coordination. हर एक activity में present है. It binds all the functions of management. अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा एक डिपार्टमेंट का दूसरे डिपार्टमेंट से, so what will happen? There will be chaos. अगर ऑर्गेनाइजेशन में, अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में लोगों की जरूरत है, लेबर्स की जरूरत है, एम्प्लॉयज की जरूरत है, तो अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एचआर डिपार्टमेंट से कंसल्ट नहीं करेगा तो हाउ विल दोज एम्प्लॉयज कम? बिकॉज the work of hiring people is of HR department. So production department को HR department से coordinate करना होगा for hiring people. Just like अगर production team जो भी product produce कर रही है उसका अगर pricing marketing department के साथ discuss नहीं होगा तो there will be chaos. So we have to coordinate every department for better performance of the organization. कभी कभी कोऑर्डिनेशन को एक सेपरेट फंक्शन की तरह भी लेते हैं. सो देयर नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन, देयर आर फ्यू नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन. फर्स्ट इज कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट. सो कोऑर्डिनेशन क्या करता है? जो ग्रुप एफर्ट्स है उनको अच्छे से दे कोऑर्डिनेट एंड यूनिफाई अनरिलेटेड और डाइवर्स इंटरेस्ट इनटू पर्पसफुल ग्रुप एक्टिविटीज. सो सारे लोगों के एफर्ट्स को मिलाकर इट मेक इट पर्पसफुल टू अचीव द organizational objective. Then second is coordination ensures unity of action. So coordination से जो सारे actions है उनमें भी unity आती है, organization में unity आती है by coordinating every department, every individuals. Then coordination is a continuous process. So अगर एक organization को smoothly run करना है तो they have to be coordination and it have to be on continuous basis. So it is a continuous process. Then fourth is coordination is all pervasive. Just like जैसे management is all pervasive, उसी के जैसा coordination is also present at every activity in every department. So it's present in every activities and every department. Then coordination is responsibility of the managers. So जो coordination है ये responsibility होती है managers की. तो हर department के managers होते हैं. Then they are responsible for maintaining coordination in the organization. Last is coordination is a deliberate function. Manager has to coordinate the efforts of different people in a conscious and deliberate manner. So managers have to coordinate every employees in a deliberate manner. So they have to cooperate with the people so that they don't feel like उन्हें लगना नहीं चाहिए कि the manager is like rude, and so they have to cooperate with them in such a manner so that they are happy and they work for the organization. So the manager have to coordinate the efforts of different people in a conscious and deliberate manner. So all the topics are covered of this chapter, the important topics. So I have given you some case studies just like the previous video. So these questions are clubbed question, comprehensive question. All the topics are related, which we studied in this video, are these questions are related to them. So thank you for watching our video. We will meet in next video with a new chapter. Don't forget to like and subscribe our channel. Thank you so much.